About Tuesday, again, I had my mock that day and my schedule got really mixed up. I forgot to join the class. I'm so sorry about that. It's fine, no issues. Okay, so were we done with chapter 17 के जो past papers है? Yeah, we were done. All right, so today we're going to be starting with chapter 18. Now, I know if you look at the bottom left, this is page 1 of 218. इसका मतलब ये नहीं कि there's 218 things in the slide student, क्योंकि एक slide counts as a topic name, फिर उसके बाद it's things being repeated again and again, then there's pictures. So it looks like a big chapter, लेकिन ये इतना बड़ा chapter बिल्कुल भी नहीं. So we're just gonna take it slow for today, and then in the next classes onwards, we'll build on that. And then once we are done, we'll start with P5. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So, ये जो chapter है, chapter 18, this basically talks about biodiversity, classification, and conservation. So you could think of this chapter as being divided into three parts. सबसे पहले conservation of endangered animals की बात होती है, फिर उसके बाद classification of organisms की बात होती है, और फिर biodiversity की बात होती है. P5 is mostly this, biodiversity. What we're going to start with in this chapter is classification, फिर उसके बाद conservation, और फिर उसके बाद biodiversity. So let's start with classification सबसे पहले. P4 में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, डिफाइन क्लासिफिकेशन. सिंपल दो वर्ड का क्वेश्चन एंड दैट्स फॉर 2 मार्क्स. तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में प्लेस कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू ऑर्गेनिजम्स इन फ्रंट ऑफ यू, अब यू नीड टू लुक एट सबसे पहले कि क्या उन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई सिमिलैरिटीज हैं, क्या उनके बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं, उनके फंक्शनल फीचर्स क्या हैं. By looking at their structural features and their functional features, you would be able to divide the two organisms into two categories. अब structural feature का example, for example, हम कह सकते हैं कि एक organism एक human है, तो humans के हाथ होते हैं hands, लेकिन दूसरा organism जो है वो एक reptile है, it's a snake. Snake obviously उसके हाथ होते नहीं है. Is that a clear structural difference? Yes. एंड अब अगर बात करें फंक्शनल फीचर की, फंक्शनल फीचर रिलेट्स टू कि ऑर्गेनिज्म फंक्शन किस तरीके से करता है, उसके बॉडी फंक्शंस किस तरीके से. फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस जो हैं वो अपना ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय गिविंग बर्थ टू लाइव यंग. जबकि अगर हम रेप्टाइल्स को देखें तो वो तो एग्स ले करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. सो दैट्स अ क्लियर बॉडी फंक्शन में फीचर. तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं into distinct categories on the basis of their structural and functional features. Structural features का एक और नाम morphological, and you could remember it by saying कि अच्छा morphological में the word morphology means shape. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम मोर्फोलॉजी देख रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का शेप देख रहे हैं, मतलब उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल फीचर्स देख रहे हैं. एंड देन फंक्शनल फीचर्स का दूसरा नाम फिजियोलॉजिकल. वी आर लुकिंग एट देयर बॉडी फंक्शंस. तो उसकी बेसिस पे हमने उनको डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. ये जो कैटेगरीज हैं, राइट, these categories have another name, and that is called taxons. Have you looked at this word in IGCSE before? Taxonomy and morphology. Do you Uh, remember? yeah, a bit. Yeah, so obviously it's been 2 years. So if you just remember a bit, even that's perfect. तो categories का जो दूसरा नाम होता है, that is basically taxons. तो classification की जो definition है, let's read the entire thing together. It is the process of placing living organisms into distinct, as in different taxons on the basis of their morphological and physiological features. ये तो हो गई classification. अब taxons का मतलब होता है categories. तो फिर टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी की वजह से क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है. बोथ ऑफ दीज आर नॉट द सेम थिंग, इट्स वन लीडिंग टू द अदर. जब तक हम टैक्सोनॉमी करेंगे नहीं, उसकी वजह से क्लासिफिकेशन भी नहीं होगी. ओनली आफ्टर यू कैरी आउट टैक्सोनॉमी फिर ही क्लासिफिकेशन होगी. लेकिन टैक्सोनॉमी एक्चुअली में है क्या? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी. What are we studying? We are studying the relationship between the organisms
and hence the process of classifying them into distinct categories. So, for example, हमारे पास organism A है, organism B है, organism C है, organism D है. You want to divide these organisms into two taxons, group 1 or category 1, and then category number 2. In order to separate them, you would have to study her organism ki morphology and physiology, right? Yes. The process of studying an organism ki morphology and physiology is called taxonomy. So, for example, you look at organism A. Acha, organism A gives birth to live young. Organism A ki nose hai. Organism A lung se breathe karta hai. That's a structural feature and a physiological feature. Then you look at organism B. Then you study C. Then you study organism D. This process of studying is called taxonomy. तो जब तक हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम टेक्सोनोमी नहीं करेंगे, क्या हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टैक्सॉन्स? Yes. आर यू श्योर? जब तक हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं करेंगे, कैन वी डिवाइड देम No. इनटू टैक्सॉन्स? No, नो. no. इसीलिए टैक्सोनॉमी लीड्स टू क्लासिफिकेशन. दीज आर द टू डेफिनेशंस यू शुड अंडरस्टैंड. अच्छा, अब आते हैं इस चैप्टर के मेन हिस्से पे, क्लासिफिकेशन में. Whenever you talk about classification, you need to remember a particular order in which organisms are classified. सबसे पहले, every organism you can think of इस पूरी दुनिया के अंदर, every organism is divided into three domains. And we'll talk about these domains in a minute, but they're divided into three domains. डोमेन्स के बाद दे आर फर्दर सेपरेटेड इनटू किंगडम्स. किंगडम्स के बाद फाइलम, फिर क्लासेस, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनेरा, और फिर या जीनस, एंड फिर स्पीशीज. You could remember this order in many, many ways. You could remember Dear King Philips came over for good spaghetti, or you could remember King Philips came over from Greece state. Anything, or if you have any other mnemonic of your own, just make sure to remember this order in the correct way. So if you remember this, for example, K for kingdom, P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus, and then S for species. इसमें domain नहीं है. That's one other thing you need to remember कि king से पहले there's also a domain. अच्छा, अब when we talk about binomial naming, could you tell me what's binomial naming? Binomial naming क्या होती है? Was it like the name you give to an organism, like with which is divided into two parts? बिल्कुल सही. We give this is binomial naming या binomial naming system is the process जिसके जरिए किसी भी organism को हम नाम देते हैं. उस organism के नाम में, you're right, it's divided into two parts. सबसे पहला part is the genus of that organism, and दूसरा part is the species of that organism. For example, humans. Humans are called Homo sapiens. Homo is the genus, and sapiens is the species. फिर एक और एग्जांपल. डू यू रिमेंबर एएस बायोलॉजी में यू लर्नड अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस इन द पैथोजेंस वाला चैप्टर? Yes. तो ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज करने वाला जो पैथोजन था, दैट वाज ईदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस. माइकोबैक्टीरियम यहाँ पे जीनस है, एंड देन ट्यूबरक्यूलोसिस या बोविस यहाँ पे स्पीशीज है. उसी तरीके से इन द सेम चैप्टर यू लर्नड कॉलेरा किस पैथोजन की वजह से कॉज होता है? विब्रियो कॉलेराe. सो विब्रियो इज द जीनस, कॉलेरा इज द स्पीशीज. प्लाज्मोडियम falciparum, this is for malaria. So plasmodium is the genus and falciparum is the species. So this is just a many many examples कि binomial naming actually में काम किस तरीके से करती है. And then what we were talking about, कि all organisms in the world are divided into three kingdoms. Every kingdom is divided into many, every domain is divided into many many kingdoms. फिर every kingdom into many phylum into classes, classes to order, family, genus, and then species. Let's talk about domains first. But before that, एक चीज हमें समझनी है. डोमेन किसी भी हायरार्कियल सिस्टम का सबसे टॉप होता है. मतलब कि यू विल नेवर एवर टॉक अबाउट द किंगडम फर्स्ट एंड देन द डोमेन. नहीं,
The process of classification हमेशा domain से ही शुरू होती है. It always starts from the top. It's never from the bottom. It's never from the middle. It's always from the top. So domain, kingdom, phylum, so on and so forth. सबसे पहली चीज. दूसरी चीज. As we move on from domain to species, could you tell me what's gonna happen? Is the morphological similarity and physiological features में similarity organisms के बीच में, is that similarity going to increase or decrease? Increase. Increase, बिल्कुल सही. Because as we keep going downwards, don't these organisms become more and more closely related to each other? Yes, they do. They do. So एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को हम होमो सेपियंस कहते हैं. मंकीज का जीनस भी होमो होता है, बट दैट्स नॉट सेपियंस. उनकी स्पीशीज अलग है. बोथ ह्यूमंस एंड मंकीज आर ऑफ द सेम जीनस, बट ओनली ह्यूमंस हैव द स्पीशीज ऑफ सेपियंस. मंकीज को की और स्पीशीज है. सो यू सी कि यहाँ पे ह्यूमंस एंड मंकीज आर डिस्टिंक्टली रिलेटेड. इतना ज्यादा सिमिलर नहीं है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है. सो एज यू कीप गोइंग डाउनवर्ड्स, the morphological features and physiological features become more and more similar. और यही लिखा हुआ है. As we move from domain to species, morphological and physiological similarities between the organisms increase. All the living organisms are currently classified into a three domain, five kingdom classification. This is part of your syllabus. कि all of the organisms तीन domain में divide होते हैं, and all of these three domains are then further divided into five kingdoms. Let's talk about these three domain and five kingdom classification. तीन domains का नाम you should remember and five kingdoms का भी नाम you should remember. सबसे पहले, there are three types of domains: domain archaea, domain eukarya, and domain bacteria. When we talk about kingdoms, you have learned this in IGCSE. Kingdoms में prokaryotes आते हैं, फिर protoctista आते हैं, फिर fungi आता है, फिर plants आते हैं, और फिर animals आते हैं. One thing, if you can just try, instead of writing the word animals, if you can try writing the word animalia, and then instead of plants, you could try writing plantae, that's gonna give you a better answer. Marking schemes में भी एनिमेलिया पहले लिखा हुआ होता है और फिर स्लैश लिख के एनिमल्स लिखा होता है. तो इट्स दिस इज नॉट रॉन्ग, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो करेक्ट, बट इफ यू कैन इट वुड बी बेटर. एनिमल्स की जगह एनिमेलिया एंड प्लांट्स की जगह प्लांटे, बाकी चीजें बिल्कुल सेम. नाउ let's look at these three domains. I want you to ignore everything which I've written here separately. Just look at these things written in bullet points अभी के लिए. जब हम थ्री डोमेन्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम हर डोमेन की मेन फीचर्स देखेंगे. Let's look at domain eukarya. When you hear the word eukarya, what word comes to your mind? The eukaryotic organisms like the animals and plants. बिल्कुल सही. The eukaryotic organisms. इसीलिए all of the organisms जो domain eukarya में होते हैं, उनकी typical eukaryotic features होती हैं. अब what are some examples of typical eukaryotic features? We can write it here. यहाँ पे कि उन सेल्स का न्यूक्लियस इज अ ट्रू न्यूक्लियस. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. अच्छा, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? यू माइट हैव सीन दिस इन मेनी बुक्स एज वेल. ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप. So the nucleuses that you have seen in organisms, for example, humans and animal cells, वो है यूकैरियोटिक फीचर्स. मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस होता है, ऐसा न्यूक्लियस जो कि एक डबल मेम्ब्रेन से सराउंड हो. बट टेल मी दिस, बैक्टीरिया में क्या डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अराउंड? No, और इनफैक्ट क्या न्यूक्लियस एग्जिस्ट भी करता है प्रोकैरियोट्स में? no. No, it's just a circular DNA which is in the nucleoid region. That's a prokaryotic feature. Eukaryotic feature number one, it's a true nucleus in the cell. Number two, membrane bound organelles होते हैं. Number three, DNA जो न्यूक्लियस के अंदर होता है is arranged as linear DNA. So it's not circular DNA, it's linear DNA in the shape of a double helix. And obviously, क्योंकि हम इस DNA के मॉलिक्यूल को कंस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि डीएनए की लेंथ तो बहुत बड़ी होती है,
we want to make it smaller in size. इसीलिए we bound or complex it with histone proteins. Could you tell me what's the function of histone proteins? वो करते क्या है डीएनए के अंदर? मतलब कि if I just take a DNA molecule and then I don't combine it with histone proteins, They what's going to basically be the difference? like basically I think DNA is basically like wound around like histone protein, so it like allows it to coil and Hmm. form like coil around and form the chromosomes. Coil around and form the chromosomes. It's just that you could remember it. The bottom line is कि इसका main function ये है डीएनए को छोटा करना. That's it. तो डीएनए की if we just try to wrap unwound it, और अगर हम पूरा डीएनए molecule को देखें without it being coiled around, it's going to be a really 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 long molecule. तो in order to make it smaller, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर इतनी जगह होती नहीं है, इसलिए to make it smaller in size, to constrict its size, we just use histone proteins. And one interesting fact, and this is also in your syllabus, by the way, कि DNA, when we talk about bacteria, it's circular DNA. But the circular DNA is not combined with the histone proteins. Do you know what do they call that type of DNA जिसमें histone proteins नहीं होता? Plasmids. Not really. It's a name for it. It's called naked DNA. And you could even search this up on the internet कि naked DNA उस DNA को कहते हैं which is simply not just combined with histone proteins. That's pretty much it. So if it is combined with histone proteins, it's just normal linear DNA. तो अभी तक हमने क्या क्या बात की यूकेरियोटिक फीचर्स में कि उनका न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस इज द डीएनए इज लीनियर combined with histone proteins. Okay, let's move on. When we talk about the ribosomes, what are the ribosomes in eukaryotic cells like 80S or 70S? Both. Both, बिल्कुल Because 7. Hmm. 70s is in like chloroplast and mitochondria. Hmm. And then 80S कहाँ पे होते हैं? There are two locations. Uh, 80s. So number one, I can give you a hint, cytoplasm. And then number two, think about it, Cytoplasm. Yeah. rough endoplasmic reticulum. Yeah. Yeah, the reason this endoplasmic reticulum is called rough is because it has ribosomes that are ATS attached onto its cisternae. इसलिए उसको rough कहते हैं because if you try to look at a smooth ER का cisternae and a rough ER का cisternae, the rough ER का cisternae appears to be rough क्योंकि small small dots उसके cisternae के साथ attached होते हैं, making it rough. तो राइबोसोम्स जो एटीएस वाले हैं साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में, वो लार्जर होते हैं कंपेयर टू दोज इन प्रोकैरियोट्स. एंड यू सेड करेक्टली, दिस इज द इंडोसिम्बायोंट थ्योरी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के 70s राइबोसोम्स होते हैं लाइक इन प्रोकैरियोट्स, और उनके अंदर सर्कुलर डीएनए भी होता है. तो दिस वाज ऑल यू ऑलरेडी नो यूकैरियोटिक फीचर्स. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट आर द फीचर्स जो कि डोमेन आर्किया में होते हैं एंड डोमेन बैक्टीरिया में होते हैं. बिकॉज लुक एट दिस, आर्किया के आगे भी प्रोकैरियोट्स लिखा है एंड बैक्टीरिया के आगे भी प्रोकैरियोट्स लिखा है. दैट्स वियर्ड राइट? इट डजंट मेक सेंस. अगर दोनों डोमेन्स आर इक्वल टू प्रोकैरियोट्स, व्हाई डोंट वी जस्ट कंबाइन देम इनटू वन? It's because there are some features that separate organisms जो कि आर्किया में है from those organisms जो कि बैक्टीरिया में है. मतलब कि कुछ ऐसे features हैं जो कि अलग हैं. So for example, if I put an organism in domain archaea and if I put another organism in domain bacteria, ये वाला organism and ये वाला organism के बीच में कुछ features different होंगी. नंबर वन, इसलिए हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स दे दिए. लेकिन इनके आगे तो प्रोकैरियोट्स लिखा हुआ है. सो व्हाट डज दैट मीन? इट मींस कि ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो कि डोमेन आर्किया में एंड डोमेन बैक्टीरिया में, दे आर गोना हैव द सेम kingdom. Could you tell me what kingdom that's going to be? Protoctista, fungi, plantae, animalia, prokaryotes. Could you repeat? So what I was saying is
There are two things to understand here. सबसे पहले तो, let's say I have an organism number one, and then I have another organism called organism two. Organism one is classified under domain archaea, and organism two जो है वो classify होता है under domain bacteria. अगर ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं, क्या इस ऑर्गेनिज्म और उस ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंट फीचर्स होने वाली हैं? Yes. बिल्कुल होंगी, राइट? दैट्स एक्चुअली द रीजन जिसकी वजह से हमने उनको डिफरेंट डोमेन्स में रखा। अगर तो वो सेम फीचर्स होती तो हम उनको सेम डोमेन में डालते। सो दैट्स डिफरेंट फीचर्स, नंबर वन। नंबर टू, these two organisms, even though they have different domains, they're gonna have the same kingdom. What is this kingdom going to be? Look at the names of both of the domains. Very well. Prokaryote. That's what you said, right? I didn't hear you. Yeah, yeah, that's it. Prokaryotes, bilkul. So, what are the two things to understand here? Though organisms can be classified into separate domains, but they can also be classified into the same kingdom. मतलब के कुछ ऐसी ऐसी फीचर्स होंगी जो कि डोमेन्स को अलग करने पर मजबूर कर रही होंगी। यहाँ पे कुछ फीचर्स अलग होंगी, यहाँ पे कुछ फीचर्स अलग होंगी, व्हिच इज व्हाई वी वुड बी लाइक अच्छा लेट्स पुट दिस इनटू डोमेन 1, लेट्स पुट दिस इनटू डोमेन 2। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसी भी होंगी जो कि सिमिलर होंगी, व्हिच इज व्हाई वी वुड बी लाइक ओके डिफरेंट डोमेन्स इज फाइन, व्हाई डोंट वी पुट देम इनटू द सेम किंगडम्स? So these are the two things जो हमें समझनी है। So out of all of this, you're gonna find some features जो कि archaea को bacteria से separate करते हैं, and then you're also gonna find some features यहाँ पे जो कि kingdom prokaryotes में same होती हैं। Does that make sense? Yes, it is. Okay. सबसे पहले तो हम उन features की बात करते हैं of domain archaea which separates it from domain bacteria। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है why archaea and bacteria are different domains। सबसे पहले सर्कुलर डीएनए जो है डोमेन आर्किया में may be associated with histones। टेल मी दिस, अगर हम एक नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करें, क्या वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होता है? No. बट नाउ लुक एट द फीचर्स इन डोमेन आर्किया। सर्कुलर डीएनए सर्कुलर तो है, बट इट मे बी एसोसिएटेड, मतलब शायद हो शायद ना हो। दिस इज फीचर नंबर वन जो कि डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया में अलग अलग है। नंबर टू, डोमेन आर्किया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं, these cells always have a cell wall, but then you would be like बैक्टीरिया का भी तो सेल वॉल होता है, बट बैक्टीरिया का सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। डोमेन आर्किया के अंदर द सेल वॉल इज नॉट मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। दैट्स फीचर नंबर टू। फीचर नंबर थ्री, जब हम बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं, किस किस्म की बाइलेयर एग्जिस्ट करती है वहां पे? What's the name of that bilayer in the cell membrane of a bacterial cell? The It's phospholipid barrier? बिल्कुल सही। It's the normal bilayer which you've been studying, phospholipid bilayer। Phospholipid bilayer कैसे बनती है? You have phospholipid molecules इस तरीके से arranged। Let's talk about one phospholipid molecule। Let me just put a different page। एक phospholipid molecule के अंदर you have one phosphate group, you have one glycerol molecule, and then you have two fatty acids। Could you tell me what is the bond that exists between the glycerol and the fatty acid? You learned this in AS? Phosphodiester? Not really। Phosphodiester bonds तो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होते हैं, राइट? इन डीएनए एंड आरएनए। Oh, I think there were ester bonds. एस्टर बॉन्ड्स, बिल्कुल सही। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के बीच में एस्टर बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। बट इफ यू लुक एट डोमेन आर्किया, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स यूनिक किस्म के होते हैं, मतलब कि फॉस्फोलिपिड्स से डिफरेंट होते हैं, एंड दीज लिपिड्स हैव ईथर लिंकेजेस। हैव यू लर्न दिस येट इन केमिस्ट्री? ईथर एस्टर के बीच में डिफरेंस? Could you repeat? हैव यू लर्न दिस इन A2 केमिस्ट्री येट? ईथर एंड एस्टर के बीच में डिफरेंस, वो जो लिंकेज होती है।
Yeah. या सो ईथर लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं इस किस्म के यूनिक लिपिड्स में जो कि सेल मेम्ब्रेन में फाउंड होता है। कौन सा सेल मेम्ब्रेन? डोमेन आर्किया वाला सेल मेम्ब्रेन। ओके, एंड देन सम सिमिलैरिटीज बिटवीन डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया, sorry, some similarities, which is why we put them in the same kingdom, kingdom prokaryotes, is कि they divide by binary fission. इसका मतलब क्या है? You put an organism in archaea, you put an organism in bacteria, but once you're done with the domains, now you move on to kingdoms, right? These two organisms are gonna be put into the same kingdom. क्यों? क्योंकि कुछ फीचर सिमिलर भी हैं। Feature number one, they divide via binary fission. Feature number two, both of these are unicellular, मतलब कि prokaryotes. Feature number three, they don't have a true nucleus. Feature number four, they don't have membrane-bound organelles. So these four features, remember this, and then these four features are what separates the domains from one another. Does this entire thing make sense? Yeah, it does. And just a heads up, ये exam में आता है as describe the differences between the two domains. So, for example, you would be given two organisms and then explain why this organism should be in archaea, this organism should be in bacteria. वो क्यों? That's when you have to list down the features found in domain archaea. So you'd be like prokaryotes and no true nucleus, no membrane-bound organelles, divide by binary fission, circular DNA may or may not be associated with histones. Cell wall is not made of peptidoglycans. Cell membrane has ether linkages. That's it. अच्छा, कुछ examples of domain archaea, because this is the first time you're hearing about this in this chapter. तो कुछ examples इसके हैं thermophiles, halophiles, and methanogens. Do you really need to remember the examples? No, just remember one and you'll be good. So thermophiles is more than enough. Okay. So you see, that's what I was saying earlier, कि slides ज़्यादा लगी हैं, but it's just that they're repeated again and again. So living organisms are classified into three domains: archaea, bacteria, and eukarya. Archaea, so whatever we talked about, we're just going to be reading it through really quickly. Archaea are prokaryotic organisms which can survive in extreme environments. This is not really important. Archaea can be classified into three categories. The three examples: thermophiles, halophiles, and methanogens. Acha, now let's talk about domain bacteria. Domain bacteria are also prokaryotic organisms. लेकिन these organisms are distinct from domain archaea. Ab, if a question comes up in the exam, describe the features of domain eukarya. How are you going to answer that? For eukaryotes? Ye- Yeah, so you're just going to list down the typical eukaryotic features? Yeah, so basically they have cells with the nucleus and they have like membrane bound organelles, and then the Mm-hmm. DNA is like arranged as like linear chromosomes and histone Mm-hmm. protein. And Yeah. basically they have both 80S ribosomes and 70S ribosomes. Mm-hmm. And basically they divide by mitosis, and cell walls are sometimes present, and Mm-hmm. they can reproduce asexually and sexually. बिल्कुल सही। So the main thing was कि you're just gonna list down all of the eukaryotic features अगर domain eukarya आया। अगर domain archaea आया, then we learned all of those features for that. लेकिन what if domain bacteria आया? तो domain bacteria के लिए you will only list down the typical prokaryotic features which you have been learning since the day you started biology in IGCSE. टिपिकल जो प्रोकैरियोटिक फीचर्स होते हैं कि नो ट्रू न्यूक्लियस, दे आर यूनिसेलुलर, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, फिर नो माइटोकॉन्ड्रिया। सो थिंक अबाउट अ नॉर्मल बैक्टीरियल सेल, यू कुड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज फीचर्स। फिर उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकन का एक और नाम भी होता है which is called myelin. Have you heard about this? If you haven't, just ignore this. It's just a synonym for peptidoglycan cell wall. It's called myelin. Anyway, तो बैक्टीरिया दे हैव टिपिकल प्रोकैरियोटिक फीचर्स। अच्छा, कभी कभार सवाल ऐसा भी आता है, व्हाई आर आर्किया classified into a different domain compared with bacteria? So tell me this, यहाँ पे हम कौन सी फीचर्स लिखें?
ऑप्शन नंबर वन, वो फीचर्स जो इन डोमेन्स को सिमिलर बनाती हैं, या ऑप्शन नंबर टू, वो फीचर्स जो इन डोमेन्स को डिस्टिंक्टिव बनाती हैं। Can you repeat the question? सो अगर क्वेश्चन हो, व्हाई आर आर्किया क्लासिफाइड इनटू अ डिफरेंट डोमेन कंपेयर्ड टू डोमेन बैक्टीरिया, व्हाट फीचर्स शुड वी लिस्ट यहाँ पे? सो ऑप्शन नंबर वन, वो फीचर्स व्हिच इज सिमिलर, या वो फीचर्स जो कि डिफरेंट है The इन बैक्टीरिया features, एंड आर्किया। the features which are different. बिल्कुल सही, द फीचर्स दैट आर डिफरेंट। ऑलवेज मेक श्योर यू चूज द करेक्ट सेट ऑफ फीचर्स टू राइट डाउन इन द आंसर, क्योंकि इवन दो योर आंसर वुड बी करेक्ट, इट वुड नॉट बी pertaining or related to the question, जिसकी वजह से you won't get the mark for it. So circular DNA may be associated with histone proteins. In cell membranes of archaea, ether linkages present होती हैं. Cell wall of archaea is not made of peptidoglycan. What is it made of? You don't really need to know that, but just that it's not made of peptidoglycan is the more important part. Right. And this is, you could just take a screenshot of this. This is just a page जो कि सारी features को domain bacteria archaea and eukarya relate करता है. So it's the cell type, the cell organization, मतलब कि unicellular है, multicellular है, क्या है, genetic material किससे बनते हैं, true nucleus, ribosomes किस type के हैं, अगर हैं भी, membrane पर organelles हैं या नहीं हैं, cell membrane lipids, फिर cell wall and then cell division which you were saying, वो किस तरीके से होती है. Right. Can Sir, I? could you just zoom out a bit more? Yeah. Yeah, All right. Acha. Ab, now that we're done talking about the kingdoms, that was the more important part. We're gonna now be talking about. Sorry. Now that we're talking about the domains, अब हम kingdoms की बात करेंगे. This is gonna be relatively more easier because you have already done this in IGs. So जो भी हम kingdom की बात करेंगे, we'll talk about them in terms of 7 points. हम उनकी सेल की ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, मतलब कि क्या वो यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं या दोनों हैं। हम उनकी सेल के अंदर फीचर्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस है या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है, राइबोसोम किस टाइप के हैं, वगैरह वगैरह। हम उनके सेल वॉल की बात करेंगे, हाउ डू दे फीड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, डू दे मूव और डू दे नॉट मूव, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, एंड सम एग्जांपल्स। दैट्स व्हाट वी गोना फॉलो द सेम टेम्पलेट फॉर एवरी किंगडम। सो किंगडम नंबर 1, prokaryotes. Prokaryotes, number one, they are unicellular organisms. And एक interesting चीज you could remember, every unicellular living organism is a prokaryote. किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट बोलते क्यों हैं? कि फॉर एग्जांपल ये प्रोकैरियोट है, ये ऑर्गेनिज्म भी प्रोकैरियोट है, हम प्रोकैरियोट बोलते क्यों हैं? जस्ट बाय लुकिंग एट वन फीचर, एंड दैट इज कि वो यूनिसेलुलर है। अगर तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, दैट्स अ प्रोकैरियोट। अगर तो वो मल्टी सेलुलर है, देन दैट्स नॉट अ प्रोकैरियोट। इट इज दैट डिस्टिंक्टिव ऑफ अ फीचर कि यूनिसेलुलर मतलब प्रोकैरियोट। अब नंबर टू, सेलुलर फीचर्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। अब लेट मी आस्क यू दिस, कैन वी से कि एवरी सिंगल प्रोकैरियोट के अंदर सर्कुलर डीएनए इज नॉट बाउंड टू हिस्टोन प्रोटीन्स? कैन यू से दैट? yes. बट रिमेंबर, डोमेन आर्किया के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो भी प्रोकैरियोट्स के किंगडम में आते थे। क्या वहां पर भी सेम पॉइंट फॉलो होता था? No. No, remember. So when you write down कि circular DNA is not bound to histone proteins, this is only true कौन से organisms के लिए? जो domain bacteria में थे। Domain archaea वाले may or may not be bound to histone proteins. So when you talk about prokaryotes का kingdom, you should say they are may or may not be bound to histone proteins. In fact, I can fix this right now. May or may not. अच्छा, उसी तरीके से when you talk about the cell wall, अब normally we are so used to saying right कि prokaryotes का peptidoglycan cell wall होता है, हमेशा होता है, but is now you should understand कि हमेशा नहीं होता है। डोमेन आर्किया के organisms भी prokaryote के kingdom में आते हैं। Do they have a cell wall made of peptidoglycan? Could you repeat? I'm so sorry.
जो ऑर्गेनिजम्स डोमेन आर्किया के अंदर आते हैं, डू दे हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन? No. नो। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स डोमेन बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, डू दे हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन? द नॉर्मल प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं। Um, सो फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलेरे, एक नॉर्मल सा बैक्टीरियल सेल, डज इट हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन? yeah. इट हैज, बिल्कुल इट डज। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डोमेन बैक्टीरिया में डालते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर टिपिकल टिपिकल प्रोकैरियोटिक फीचर्स होंगी। लेकिन अगर उस ऑर्गेनिज्म को डोमेन आर्किया में डालते हैं, थोड़ी फीचर्स अलग होंगी। लेकिन बोथ ऑफ दीज डोमेन्स drop down into one kingdom, and that is prokaryotes. So prokaryotes में organisms are usually made of peptidoglycans and not always, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया डोमेन भी आता है एंड आर्किया डोमेन भी आता है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। अच्छा, अब prokaryotes are also autotrophic or heterotrophic. Could you tell me the difference between both of them? Any idea? Autotrophic, they basically make their own food, and heterotrophic, they basically um, rely on the food made by other organisms. बिल्कुल सही। So heterotrophic rely on other sources of nutrition and autotrophic are those which make their own food. खुद वो खाना बनाते हैं। I don't know if it's weird. Many students say कि it's weird if we write down the notes in our own language, जैसे कि रोमन उर्दू में। Do you find that weird? No, I Yeah, don't. do you? Yeah, most people don't usually do that. But I'm like कि अगर notes हमें खुद से ही पढ़ने हैं तो हम उस language में लिखें ना which we are most comfortable with. So वो खुद खाना बनाते हैं। Okay. Prokaryotes are motile or immotile. मतलब कि they can move, लेकिन कुछ prokaryotes ऐसे भी होते हैं जो move नहीं कर सकते। अब कुछ move कैसे कर सकते हैं? Because they have a flagellum. Now, इन एएस, डू यू रिमेम्बर कि फ्लैजेलम क्या एक ऐसी फीचर होती थी जो हर बैक्टीरिया में होती थी, या ऐसी फीचर जो कि समटाइम्स प्रेजेंट होती थी, मतलब कुछ बैक्टीरिया में होती थी? व्हिच टाइप ऑफ अ फीचर वाज इट? ऑलवेज प्रेजेंट और समटाइम्स प्रेजेंट? Sometimes present. बिल्कुल सही, समटाइम्स प्रेजेंट। फ्लैजेलम इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी सिंगल बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर फ्लैजेलम होगा वो मोटाइल होंगे, जिनमें नहीं होगा वो इमोटाइल होंगे। Every prokaryotic cell divides by binary fission. There is no mitosis, there is no meiosis, nothing. It is binary fission. Example, cyanobacteria, Thermophilus aquaticus. This is not really important. It's just to give a reference कि इस तरीके के prokaryotic cells exist करते हैं। So just to summarize, unicellular होते हैं, कोई membrane bound organelle या nucleus नहीं होता है, 70s ribosomes होते हैं, circular DNA may or may not be bound to histones, cell wall may or may not have peptidoglycan in it, autotrophic or heterotrophic, motile or immotile, divide by binary fission. Let's just read this through. The prokaryotic kingdom has the following features: unicellular. Most, again, see, not all. Most prokaryotes have a peptidoglycan cell wall. They do not have a two nucleus, which implies that their genetic material, DNA, is case में circular DNA, is not membrane bound. And they also don't have membrane bound organelles. The circular DNA is also not bound to histone proteins. They may contain plasmids. Remember, फ्लैजेलम के साथ प्लाज्मिड्स भी एक ऐसी फीचर थी जो कि समटाइम्स प्रेजेंट होती थी। सो दे मे और मे नॉट कंटेन प्लाज्मिड्स, बट ऑल ऑफ देम डू कंटेन 70s ribosomes. Again, they may or may not be motile depending on the presence of a flagellum. They may be heterotrophic or autotrophic. They divide by binary fission. So if you're having difficulty remembering itne sare points, just remember कि your answer should be related to this. कि for every kingdom you should know कि क्या वो unicellular या multicellular है. You should know कि nucleus क्या membrane bound है और दूसरे organelles membrane bound है या नहीं है. Cell wall किससे बनी हुई है. Mode of nutrition क्या है. Do they move or do they not move? And how do they divide, and one example for each. That is it.
Acha, let's talk about the next one. This is an example, by the way, of a bacteria. Now, let's talk about Protoctista. Now, this is interesting. One simple way to remember kingdom Protoctista ke features, one very simple way. Think of this kingdom as the dustbin kingdom. Now, this might sound a bit weird, but एक minute. This is called the dustbin kingdom. इसका मतलब क्या है? Suppose you have an organism जिसकी कुछ features are similar to kingdom prokaryotes, right? So it has maybe two or three features जो कि kingdom prokaryotes में classify होने वाले organisms की होती हैं. लेकिन it does not have all of the features जो kingdom prokaryotes वाले organisms की होती हैं. For example, it may have a membrane bound nucleus. Can you put that organism into prokaryotes? No. We can't. Even though it has two or three features like prokaryotes, it's not prokaryotes क्योंकि सारी features prokaryotes वाली नहीं है. तो इसीलिए हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं. वी पुट इट इनटू द डस्टबिन किंगडम एंड दैट इज प्रोटोक्टिस्टम. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू हैव एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज टू और थ्री फीचर्स सिमिलर टू एनिमल वाला किंगडम जो है, लेकिन सारी फीचर्स एनिमल वाले किंगडम की तरह नहीं है. सपोज दिस ऑर्गेनिज्म मेक्स हिज ओन फूड. कैन यू पुट देम इनटू एनिमल्स? No. So again, what do? You put them into the dustbin kingdom. You put them into Protoctus. So just remember, kingdom Protoctus बना ही इसलिए था ताकि उन सारे organisms को एक category में डाल दें, which have some features similar to the other kingdoms, but not completely ताकि वो उन kingdoms में जा सके. तो उनको एक dustbin बना दिया. So the entire kingdom is essentially just organisms which were not able to fit in to other kingdoms. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ में भी इसको देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं विच एम फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. बहुत सारे बच्चों का नहीं भी होता है, तो वो किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं. सेम केस यहाँ पे. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर competing टू गो इनटू किंगडम्स, किंगडम एनिमल, किंगडम प्लांट, किंगडम फंगाई, किंगडम प्रोकैरियोट्स. लेकिन दे हैव सम फीचर्स बट नॉट ऑल ऑफ देम. तो हम क्या करें, हम उनको डस्टबिन में डाल देते हैं, डस्टबिन किंगडम में, विच इज किंगडम प्रोटोक्टिस्टा. तो यू वुड सी अ वैरायटी ऑफ फीचर्स. कुछ प्रोटोक्टिस्टा मल्टीसेलुलर होंगे, कुछ यूनिसेलुलर होंगे. कुछ के पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, कुछ के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं भी होगा. कुछ के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, कुछ के पास नहीं भी होंगे. कुछ में डीएनए लीनियर होगा, कुछ में सर्कुलर होगा. किसी किसी में हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड होगा, किसी किसी में हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड नहीं होगा. कुछ में एटीएस होगा, कुछ में 70s राइबोसोम्स होगा. मे और मे नॉट हैव अ सेल वॉल. ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. मोटाइल और इमोटाइल. माइटोसिस और मायोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और asexual reproduction. So you see there is a clear variety of features in this kingdom. Yes. क्योंकि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट? दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कुडंट फिट इनटू एनिमल्स, अब वो वाले फीचर्स भी प्रोटोक्टिस्टा में आ गए. कुछ ऑर्गेनिजम्स व्हिच कुड नॉट फिट इनटू प्रोकैरियोट्स, वो वाले फीचर्स भी इसमें आ गए. कुछ ऑर्गेनिजम्स व्हिच कुड नॉट फिट इनटू प्लांट्स, वो वाले फीचर्स भी यहाँ पे आ गए. सो वी हैव बेसिकली कलेक्टेड इतना बड़ा कलेक्शन ऑफ फीचर्स व्हिच इज कॉल्ड किंगडम प्रोटोक्टिस. सो ऑल ऑफ द फीचर्स व्हिच यू कैन थिंक ऑफ, जैसे कि अगर सेल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दो चॉइसेस हैं, या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टी सेलुलर होगा. इस किंगडम में दोनों होंगे. अब लेट्स टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. या तो ऑटोट्रॉफिक होगा या तो हेट्रोट्रॉफिक होगा. यहाँ पे दोनों है. या तो मोटाइल होता है कोई ऑर्गेनिज्म या तो इमोटाइल होता है. यहाँ पे दोनों है. सो जस्ट a easier way to remember this, think of all of the options and write down every single option you can think of in that particular question, and that's gonna solve this feature को remember करने वाला मसला. So let's read this. Protoctis are eukaryotic organisms that cannot be classified into fungi, animal, plant, or prokaryote. इसलिए they may be unicellular or multicellular. They may or may not have a true nucleus and membrane-bound organelles. They may or may not have linear DNA. They contain ATS, sometimes 70s. May or may not be motile. May or may not be autotrophic or heterotrophic. May or may not have a cell wall. Some examples:
प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस आर एल्गे। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं which wanted to go into the kingdom plantae, लेकिन वो जा नहीं पाए, तो वो अब प्रोटोक्टिस में आ गए। सो प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस एल्गे। उसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोटोक्टिस भी हैं जो एनिमल किंगडम में जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जा पाए बिकॉज दे कुडंट क्वालिफाई। तो अब प्रोटोजोआ में चले गए। कुछ ऑर्गेनिज्म जो फंगाई में जाना चाहते थे बट दे कुडंट, सो नाउ दे आर इन प्रोटोक्टिस। स्लाइमी मोल्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ सच। There are some examples. So animal like, protoctist, plant like, फिर उसके बाद fungi like, and then this is also another plant like algae. ये भी कुछ features हैं, कुछ examples हैं इसके। Any confusion यहाँ तक? No, it's clear. Okay, so I think we'll stop here for today because ये जो अगला kingdom है, kingdom fungi, it has some features similar to plants and some to animals. So I don't want to get it all jumbled up and confused. So we'll keep it till here today. हम इसको अगली क्लास में continue करेंगे. So could you just give a summary of what we did today? Could you repeat? I'm so sorry. There's a lot of background noise. Could you just give a summary of what we did today? Yeah, okay. So basically, first we talked about uh, binomial naming system, and then we talked about taxons, and then basically we talked about the three domains they are, the domain bacteria, domain archaea, and the domain eukarya. And then basically we talked about their features, uh, Mhm. that the bacteria and are that all the organism present in different domains have differences. Like bacteria, they don't have a nucleus and they have a circular DNA, not no histone proteins. And plasmids are sometimes present in no membrane-bound organelles and 70s ribosomes. And base and cell walls are also present, and they divide by binary fission, and they usually exist as single cells. And basically then we talked about the features of archaeans, that they don't have a nucleus, and they and DNA exists as like circular chromosomes, I think, and there are no membrane Mhm. bound organelles. And plasmids are also sometimes present, and they also have 70 as ribosomes. And the lipid bilayer, I think it's different for them. And I mean, archaea के लिए, yes. yeah, and then the cell walls are always present, but they're not made up of glycan, and they divide by binary fission, and they usually exist as single cells. And then eukaryotes, they have a nucleus and membrane. They are membrane-bound organelles, and the DNA is arranged as linear chromosomes with histone proteins, and there are 80s ribosomes as well, and 70s ribosomes. And the cells divide by mitosis, and the cell walls are sometimes present. And then we talked about the kingdom Protoctist, which was basically which could be eukaryotic, and basically it is usually single cells, or it could exist as uh, it could also be multicellular, Mhm. I think. And Correct. basically some Protoctists, they have animal-like cells, and uh, some have like plant-like cells, like with the cell walls and chloroplasts, I think, like that. बिल्कुल सही। अच्छा, let me ask a question, थोड़ा सा ये टेक्निकल हो सकता है बट लेट्स सी इफ यू कैन रिमेम्बर दिस। जो डोमेन आर्किया के अंदर सेल्स होते हैं, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर व्हाट टाइप ऑफ लिंकेजेस आर प्रेजेंट? एस्टर या ईथर? Ether linkage. ईथर, बिल्कुल सही, ईथर लिंकेजेस। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया। Alright, so that would be it for today. We'll continue this inshallah tomorrow. Right. Okay. Thank you. Allah Hafiz.